ओके प्रैक्टिस करते हैं इस ड्राइंग पे। देखिए सिंपली इसमें जो इसका टॉप व्यू यहाँ पे एंड देन फ्रंट व्यू और साइड व्यू यहाँ पे गिवन है आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, तो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे इसके यहाँ से बेस से, फ्रंट व्यू से और टॉप व्यू से। देखिए यहाँ पे इसमें जो सर्कल है वो 40 एंड देन 20 डायमीटर के हैं। ठीक, तो सेंटर डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए जो वन साइड है सेंटर है 38.16 के 16 एंड देन 20। तो इसको ड्रॉ करेंगे सिंपली। मैं यहाँ पे आता हूँ सॉलिडवर्क्स स्क्रीन पर, स्केच एंड देन चूज, और मैं यहाँ से लेता हूँ इसमें आप टॉप प्लेन लीजिए। ठीक है, टॉप प्लेन लीजिए यहाँ पे एंड देन ड्रॉ दिस सर्कल। ठीक है, okay, then again specify the dimensions. This is 40 diameter and this is 20 diameter. Now select it and then select this, select and add the relation equal, and now select this circle and hold the control key and select the circle and make the relation equal. Okay, now again take a line and draw the quadrant. Okay, and then select it, select this line and this center point and make coincident. Okay, simple. Select the center point and the line and give the dimension 38.16. ठीक है, and same from here. .16. Okay, now and then again draw the circle, same diameter, select and select this, hold the control key and add the relation equal. Now again select the circle and hold the control key and add the relation equal. Then again define the vertical distance from the center of the circle, which is 80. Okay, and then again this is also the vertical center from this is 20. Now select the center point and the center point, hold the control key and make the relation vertical. Now sketch is fully defined. Take 3-point arc and draw the arc from here to here. Now again 3-point arc and draw the arc. Okay, then again same here. Now define the radius of this arc, which is 60. And select this arc and this arc, make the relation equal. Now again select this circle and hold the control key and this arc and add the relation tangent. Now select this circle and this arc, add the relation tangent. Now again same here, select this circle, hold the control key and this, add the relation equal. Same here, select the center, hold the control key and the arc, add the relation equal. Now the sketch is fully defined. Take power trim and trim these entities because we don't require it. And now okay, then again right click, extruded boss base, and the boss base length is 20. Now select it, contour and delete it, and then okay. So here it is, base is prepared. Now draw the side portion. They are having 60 and then 30 diameter. Select it. First of all select this face that we required. Okay, right plane and then right sketch. Now draw the circle, select and then right click. Okay, specify the 60 diameter and this is 30 diameter. Now again take a smart dimension and draw this distance, which is 40. ठीक है, oh sorry 60.
then this distance is 40. Sketch is fully defined. Draw a line from here, okay, from here to here. Now select the circle and hold the control key and the line and add the relation tangent. Now take power trim and trim the extra line. Now again take line and from quadrant to the midpoint of this, or you can also give the dimension from this here to here. Now sketch is fully defined and this remain. Convert entities, convert these entities, okay, a clear section, these entities and these entities and these entities. Now take power trim and trim this, okay. Then again take a smart dimension and define this point. This is 95 now, okay. Then again take power trim and trim these entities. Now again right click and extruded boss base, and from mid plane, this is also 20. Now selected contour and delete it and then okay. Yeah, so I hope कि clear हुआ हो ये. Then again यहाँ पे जो हमें radius देनी हो 15 की, feature and then fillet, okay, 15 radius and select this. Now okay, yeah, I hope कि clear हुआ हो ये. Then again right click appearance and right click appearance part, draw these. Now okay, then again file, make drawing from part. Before it save this model, again choose the A3 sheet and then okay. Now drawing to left click on it and preview on रखिए. जो ड्राइंग आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं वो आपको शो होगी, ठीक है. टॉप व्यू एंड देन ये इसका राइट साइड व्यू. इसमें आइसोमेट्रिक व्यू शेडेड विथ एज, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ इसको. देन अगेन ओके. या आई होप कि क्लियर हुआ इतना आपको. देन डायमेंशन लगाएंगे इसमें, एनोटेशन, मॉडल आइटम, और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए इंटायर मॉडल, इंपोर्ट आइटम इनटू ऑल व्यूज एंड देन ओके. तो जो डायमेंशन हमने इसमें दिए हैं वो देखिए यहाँ पे सभी शो हो जाएंगी. जो डायमेंशन शो नहीं होंगी उसको हम अलग दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है. जैसे कि देखिए यहाँ पे जो 30 और 60 के डायमीटर है वो यहाँ शो हुए हैं, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से शो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ शो कर देता हूँ इसको. सिंपल करना क्या है, डायमेंशन को मुझे यहाँ लेके आना है. सेलेक्ट दिस डायमेंशन एंड प्रेस दिस शिफ्ट की एंड देन शिफ्ट हिट, ठीक है. यहाँ रख दीजिए इसको, ठीक है. नेक्स्ट, देन अगेन सेम, सेलेक्ट दिस डायमेंशन एंड प्रेस दिस शिफ्ट की एंड नाउ इसको भी यहाँ रख दीजिए उठा के, ठीक है. पहले हमें क्या करना है, डायमेंशन सेलेक्ट कीजिए एंड ठीक है, एंड इसको यहाँ ले आइए. अभी मैं इसको यहाँ ले देता हूँ, ठीक. सेलेक्ट दिस कीज, नाउ ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 60 और 30 अच्छे से विजुअल है, ठीक है. दैन ये 10, ओके, 95 एंड देन ये 20, then 38.16 and this is also 38.16, this is 20 and 60. Okay, then again we need this जो भी डायमेंशंस यहाँ पे शो हो रही है वो हॉरिजॉन्टली हों. तो हम ये सेटिंग एंड देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायमेंशन और यहाँ पे आई लीनियर, ठीक है. तो लीनियर में यहाँ सेलेक्ट कीजिए इसमें जो पोर्शन है आपका इसमें हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड देन ओके.
ठीक, जो भी डायमेंशंस आपने दिए हैं यहाँ पे वो देखिए, जो लीनियर डायमेंशंस हैं आपकी वो सभी हॉरिजॉन्टल आ गई, देखिए ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गई हैं। एंड देन डायमीटर भी ये इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो हम डायमीटर को भी लेंगे इसमें। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायमेंशंस, और यहाँ पे देखिए डायमीटर, तो डायमीटर को मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ इसमें, तो यही डायमीटर भी सारे हॉरिजॉन्टल से होंगे इस तरीके से, ठीक है। देन अगेन रेडियस यहाँ रह रही है, तो सिंपल रेडियस के लिए एक अलग ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे आप डायमेंशन प्रॉपर्टीज एंड देन यहाँ देखिए रेडियस, तो आप रेडियस को भी हॉरिजॉन्टल कीजिए, ठीक है। देन अगेन या सेव इट। आई होप कि क्लियर हुआ हो ये। देन फाइल एंड देन सेव एज, और सेव एज में यहाँ पे चूज कीजिए, सो सेव एज टाइप अडोबी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ एंड देन प्रिंट इट। ये पीडीएफ जनरेट कर देगा ये, और आप उसे प्रिंट कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें। थैंक यू।